So hello everyone and guys, welcome to your another important session with regards to the government schemes. Guys, we are discussing the government schemes from the past few weeks now, and we've started with the scheme of Ministry of Finance. Then we started with the next important ministry, that is Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. So we were discussing the scheme on credit guarantee scheme for micro and small enterprises, and now on this scheme I have discussed about Safurti also. So today we're going to discuss about this important scheme of Safurti. So what is Safurti all about? Safurti stands for Scheme Fund for Regenerational of Traditional Activities. That is, we have to regenerate our traditional industries. Now, the important thing is, when I talk about traditional industries, what's the meaning of regeneration here? Let's try to understand it with a case study that we always used to discuss. हम हर स्कीम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं एक स्टोरी फॉर्म करके. देखो, ये हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री है जहां पे हम ट्रेडिशनली खेती करते थे या फिर ट्रेडिशनली ऐसे काम कर रहे थे हम लोग. अब हम इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को क्या करना चाहते हैं, हम ना एक बड़े इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं. ठीक है, अब इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को चेंज करना, हम पहली बात है कि चेंज करना ही क्यों है. व्हाई वी वांट टू रीजनरेट अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. रीजन इज सिंपल, बिकॉज देयर इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट which is going on, okay, and the persons have to compete with this competitive market. Second thing is there is an इनोवेटिव सिस्टम आ चुके हैं, इनोवेशन आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेंगी अपने आप को काम करवाने के लिए. अब ये चीज को करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हमें इनको रीजनरेट करना है. रीजनरेट करोगे कैसे? रीजनरेट करने के लिए हमने बोला वी विल फॉर्म क्लस्टर्स. इन्होंने बोला हम आपके क्लस्टर्स बना देंगे. अब नाउ दे हैव सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन. सबसे पहले, इज दिस क्लस्टर, व्हाट इज द eligibility for a cluster? Eligibility means, is there a geographical area, number of persons that you are going to set up here? तो किस किस में persons लगा लीजिए, कितने persons का cluster बनाओगे. अब आता है टाइप ऑफ क्लस्टर, किस तरह क्लस्टर बनाना चाहते हो. अब इज इट रेलिवेंट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज और सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज. क्लस्टर कौन सी इंडस्ट्री को कैटर करके बनाना चाहते हो, ये भी क्वेश्चन आ गया कि कौन सी इंडस्ट्री को कैटर करना चाहते हो. ठीक है, अब ये क्लस्टर बना दिया. अब इन्होंने बोला कि आपने क्लस्टर तो बनाना है, क्लस्टर ही क्यों बनाना था हमारे लिए. इन्होंने बोला क्लस्टर से हम आपको क्या देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गिव यू बेटर गवर्नेंस. We want to give you a financial support, ताकि आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी बढ़ जाए. तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम आपको देना चाहते हैं. अब इन सब चीजों को करके इन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो मेंबर्स उनको मना लिया कि ठीक है यार, हमें चलो ठीक है, आप चेंज करना चाहते हो, हम रेडी हैं. तो सबसे पहला जो थिंग थी, उन्होंने पूछा कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज को आप पकड़ना चाहते हो. Are you trying to cater all industries? Government said no. We are going to cater industries like clusters will be built on khadi, village and coir based industries. तो पहले तो हमने बहुत स्पेशल, क्योंकि हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ट्रेडिशनल में खादी इंडस्ट्री आती है, आपको छोटी मोटी विलेज इंडस्ट्रीज होगी, कॉयर बेस्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आ गई. ठीक है, इन्हीं को लेके गवर्नमेंट ने 2005 में स्कीम लॉन्च, इसका नाम था सफूर्ती. ठीक है, 2005 स्कीम गॉट स्टार्टेड, जहां पे फॉर खादी एंड विलेज केवीआईसी इज द नोडल एजेंसी एंड फॉर कॉयर बेस्ड इंडस्ट्री कॉयर बोर्ड वाज द एजेंसी हियर. इट्स अ सेंटर सेक्टर स्कीम व्हिच मींस इट इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेट्स ट्राई टू थिंक, जो क्वेश्चन गवर्नमेंट बोल रहा था कि हम आपको क्लस्टर्स बना के देंगे, हम आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट ड्रिवन और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये क्लस्टर बना रहे हैं. थिंग इज देयर, वी वांट टू स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नेंस सिस्टम वेयर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एक्टिवली दे विल बी पार्टिसिपेटिंग हियर. वी विल बिल्ड अप इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल स्किल्स, इंप्रूव टेक्नोलॉजीज, improve the public private partnership modes will be added here, advanced processes and technologies will be set up here. Think why government want to set up the clusters here, that's the thing here. Now let's, the next question is, what are the clusters that are going to be set up here? So as I told you, the clusters will be selected on these criteria. First of all, the clusters will be set up on geographical concentration, where at least 10% people should be from northeast region, and in a cluster there will be around 500 beneficiaries families that will be set up here. Around 500 families आप यहाँ पे
ठीक है, 500 beneficiaries families will be covered here. Then I told you that the industries are खादी, कॉयर एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, विच ऑल्सो इंक्लूड लेदर, पोल्ट्री, ये भी इसके बीच में आ जाता है, विलेज इंडस्ट्रीज की पार्ट एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, इनको बोला कि हम आपको क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर भी दो तरह के, एक होगा रेगुलर, एक होगा मेजर क्लस्टर। रेगुलर क्लस्टर अप टू 500 आर्टिजन and major cluster is which has more than 500 artisan. Then I told you why we want to set up a cluster, because they are going to give you a financial support here. So how the financial support is provided here? Financial assistance up to rupees 8 crore, that is maximum of 8 crore rupees will be supported, and these financial assistance will be given on some sort of interventions that will be soft, hard and thematic interventions. Now 8 crore is the financial assistance, but is it for both? So for regular assistance up to 2.5 crore rupees will be given, and for major cluster assistance up to rupees 5 crores will be given here. Now the thing is, which are the eligible artisans that are here? So guys, you can see everyone who is involved in the traditional industries is there. Artisan, workers, machinery maker, raw material provider, private business developers, artisan guilds, cooperatives, consortiums, NGOs, state government institutions, all are being targeted here. And then what the government has done is, government has also merged the earlier existing schemes which were focusing on traditional industries, like the scheme for enhancing productivity and competitiveness of khadi industry and artisan, product development, design intervention and packaging scheme, scheme of rural industry service center, and the Ready Wrap Units Ready to Wear mission. They were also being merged under the Safurti scheme here. Now we've discussed all things. Let's again revise the thing from where we have started. That is the case study we have. So what is the thing the government has done is, government said we are going to set up clusters. कौन से क्लस्टर्स बनाएंगे? इन इंडस्ट्रीज में देखिए हम क्लस्टर्स बनाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? हम अराउंड 500 फैमिलीज, जिसमें से 10% नॉर्थ ईस्ट, इनका एक क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर्स बनाएंगे हम दो तरह के, रेगुलर एंड मेजर क्लस्टर। रेगुलर वी विल हैव अप टू 500 आर्टिजन, मेजर वी हैव मोर देन 500 आर्टिजन, ठीक है। 2.5 करोड़ up to 5 crore assistance is provided here. Overall financial assistance given will be 8 crore rupees. So this is all about this Safurti scheme. Just in a single line I can say this is the major factual information you need to remember in the Safurti scheme here. Okay, so that is all about this specific scheme. बाकी objectives मैंने आपको बता ही दिया, गवर्नेंस ये तो आप समझ ही लोगे यहाँ से, ठीक है। I hope you have understood the scheme. Now if you have understood the scheme, please solve the specific question on the Safurti scheme here. Tell me which of the following statements regarding the Safurti scheme are correct. It is a central sector scheme and it is aimed at promoting the cluster development of traditional industries. Scheme provides financial assistance up to rupees 10 crores for specific project under soft, hard and thematic interventions here. Clusters selected under the scheme must include at least 10% of their beneficiaries from the northeast region. So what should be the answer here? Quickly tell me in the comment section. Now let's proceed towards the homework question from previous session. We've discussed the scheme that is on the credit guarantee scheme for e-national warehouse receipt based pledge financing here. So let's look at the question. The question is, the scheme provides loans up to rupees 75 lakh for agriculture purpose and 2 crores for non-agriculture purpose. Absolutely right. Guarantee cover under the scheme is 85% for loans up to rupees 3 lakh and 75% for loans up to 2 crore rupees. Again right. The settlement of claim for loan is done in 2 installments of 60% and 40%. That's wrong, because it is 75% and 25%. And our answer will be option number A. 1 and 2 will be my right answer here. Okay, this was all about today's session, guys. I hope you have enjoyed this session. If you have really liked this session, please do subscribe to our YouTube channel, and for the PDF, please subscribe to our Telegram channel, the link for which is given in the description below. Now if you again have any sort of doubt in your mind and you want to have a conversation with us, or you want to have a discussion on the strategy on which you are preparing, what you can do is just drop me an email on our email ID, that is hello@edutab.co.in,
You can have a call with me on this number, that is 81462 07241. This was all about our today's scheme, and I will meet you in the next scheme session. Till then, keep working hard, keep preparing hard. Bye-bye.